So good evening, everybody, Yes, please start. and welcome to this 8th webinar of Shahbad Ophthalmical Society. शाहबाद ऑप्थेल्मिकल सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बट एक ब्रीफ हिस्ट्री भी बताना बहुत ज़रूरी होता है। आज से काफ़ी साल पहले 1989 में हमने डॉक्टर रुंगटा ने, डॉक्टर मनोरंजन प्रसाद, डॉक्टर BK सिंह और डॉक्टर अशोक चौधरी, ये 4-5 लोग मिल करके, डॉक्टर AC सिन्हा, ये 4-5 लोग मिल करके हम लोगों ने आरा IENT क्लब बनाया था। एंड आरा के बहुत पुराने थे डॉक्टर BM सिन्हा और डॉक्टर रमनी बाबू। ये 5-6 लोग मिल करके हम लोगों ने आरा IENT क्लब बनाया और हम लोग की हर महीने एक संडे को मीटिंग हुआ करती थी। ग्रेजुअली जैसे जैसे डॉक्टर्स बढ़ते चले गए, हम लोगों ने फिर एरिया बढ़ाना शुरू किया, बक्सर के लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू किया। डॉक्टर पांडे वहाँ से ज्वाइन किया और भी आसपास के शहरों में सब लोगों ने इन्वॉल्व करना शुरू किया। और आज ये स्थिति है कि शाहबाद ऑप्थेल्मिकल सोसाइटी इतनी बड़ी हो गई है कि इसके मेंबर्स सिर्फ शाहबाद में ही नहीं है, शाहबाद के आसपास के ये जो छोटे छोटे कस्बे हैं, शहर हैं, वहाँ से भी लोग इसको ज्वाइन करते हैं। ये चाहे वो बिहटा हो या फिर औरंगाबाद हो या फिर आसपास के, इवन गाजीपुर से भी कभी कभी यहाँ पर ज्वाइन करने आते हैं। तो अच्छा लगता है। ये उस समय की बात है जबकि हम लोग वेबिनार नहीं कर रहे थे, हम लोग रेगुलरली मिलते थे किसी न किसी जगह पर, प्रेफरेबली होटल। और अधिकतर लोग जो पटना में बैठे हैं, अधिकतर लोग उन मीटिंग्स में आकर के उन्होंने हम लोगों को कुछ न कुछ टॉक्स जरूर दी हैं। आज के वेबिनार एक छोटे से एक चार्ट रिलीज हुआ था कुछ हफ्ते पहले बाय डॉक्टर KL अग्रवाल। बिहार ऑप्थेल्मिकल सोसाइटी का जो मेन ग्रुप है उसमें इन्होंने एक चार्ट लाया था अबाउट डिफरेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और उनका जो क्या क्या इस्तेमाल है, किस तरह के यूज एंड मिस यूज हैं, उनके बारे में बताना शुरू किया था। और हमको याद है कि लगातार 2-3 दिनों तक इस पर अच्छी खासी चर्चा होती आई थी। तो हमने और डॉक्टर रुंगटा ने फिर बाद में डिस्कस किया कि नहीं, इसको हम लोग एक लाइव वेबिनार में डिस्कस किया जाए, देखें कि क्या आपस के डिस्कशन का रिजल्ट क्या है। क्योंकि टेक्स्ट में बहुत सारी बातें लिखी या पढ़ी या सुनी नहीं जा पाती हैं, तो आमने सामने बैठेंगे तो ज़्यादा बातें होंगी। इसी संदर्भ में आज की मीटिंग, आज के वेबिनार। एंड अब मैं माइक देता हूं हमारे एक को होस्ट और जिनको ओपनिंग रिमार्क देना है, डॉक्टर रवि रंजन फ्रॉम विक्रमगंज। रवि। Ravi Ranjan sir, I think he is joining in. So, tab tak Rungta sir, you can give your welcome address and introduce the guest panelists, please. Ravi ji, anyhow, I welcome you all in this 35th CME and 8th wave event of Shahbad Society. Actually, we were expecting that this corona pandemic will be over soon, but we are close to the second wave now, which is being felt in many other states like Maharashtra and Kerala. So we should continue taking all possible precautions against this. And please, this is my request, do not go to your workplace without proper guard. I welcome both eminent presenters of the day, Dr. Sudhanshu Mathur and Dr. KL Agrawal. Both of them, in spite of their pre-scheduled heavy engagements, spared their time to be here with us this evening. I welcome all the chairpersons, program coordinators, panelists on the SOS web platform, and above all, our honorable guest panelist, Dr. Ranjana Kumar, who is a versatile cataract and refractive surgeon, consultant, Drishti Eye Care, Patna, currently editor, Bihar Journal of Ophthalmology, state head, Bihar chapter, Women Ophthalmic Society. He has been faculty in state, national, and international conferences, and above all, an extempore orator.
And the second guest panelist is Dr. Sudhir Kumar. He is a reputed teacher and a seasoned ophthalmologist and a great master in giving tips for all the things. And we are fortunate to have you all with us. Because of your presence, today's session will be more interactive. After these two talks, we will have question and answer session at the end. Hope after this web event, everybody will be wiser. And this society is obliged to people from Ajanta Pharma for their generous technical support. Welcome everybody. Over to today's moderator of the session. Dr. Abhishek is not there. Dr. Nilesh will be moderating this session today. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you for that welcome address. Ravi sir, I can't see Ravi sir here. I think he's still logging in. So let's move on with the talk. The first talk is by Dr. K. Agrawal sir. And to introduce him, I welcome again Dr. Deepak sir. Sir. Deepak sir, mute hai sir. Yes. Thank you, Nilesh, for giving me another opportunity to talk, which I always relish. Dr. K. Agrawal is a very good surgeon of repute now. He started his journey from Belgaum Medical College, General Medical College, Belgaum, then honed his techniques at Madurai and Chennai in medical retina and phaco. And presently, then he went for FRCS, Glasgow. Presently, he is chief surgeon at Satyabhama Netra Eye Clinic or Netra Sansthan in Katihar. Apart from this, he is a very nice person. And another unique thing about him is he is giving lenses, he is implanting lenses, and all those are fakes. Iris clip lenses, but in the posterior chamber, so that there is no difference in the intraocular vision of the patient. And I know there are at least 2-3 personal patients of mine who got operated by him a few years back. And this is a unique thing. Not many in India are doing all this. So with this small introduction, I present to you Dr. K. Agrawal. Thank you, sir. Thank you for that kind introduction of K. Agrawal, sir. I welcome K. Agrawal, sir, to deliver his talk on a most important topic, steroids in ophthalmology, a judicious strategy. Welcome, sir. Sir, mute. K. Agrawal, sir, mute, sir. Good evening, everyone. I'm very thankful to Rungta sir and Shahbad Ophthalmological Society for giving me this opportunity. Am I audible clearly? Yes, sir. Yes, You're yes, audible, you sir. are. Screen is visible. Yes, yes. We'll start with the introduction. Steroid developed in 1940s, these drugs remains the most potent agent against the ravages of inflammation, while many truths and myths abound about the dangers of steroids. Far more harm has come from withholding steroids than has occurred from their potential side effects. With knowledge of process of inflammation and fundamentals of steroids, these agents can be used safely and effectively in ophthalmic settings. If any noxious stimuli, there is release of phospholipid, membrane phospholipid, and in presence of phospholipase, it gets converted into arachidonic acid. And there is two pathways can be activated. One is the cyclooxygenase pathway and lipoxygenase pathway. What is the clinical importance of the cyclooxygenase pathway and lipoxygenase pathway in our day-to-day clinical practice? This cyclooxygenase pathway usually activated due to trauma. Suppose we are doing the phacosurgery, there is ocular trauma.
So there is more chance of the cyclooxygenase pathway activation. But when there is allergic reactions or immune related reaction, there will be more activation of the lipoxygenase pathway. As for example, there is allergic conjunctivitis, there is scleritis. Here there is no trauma, but there is more activation of the lipoxygenase pathway. So the condition where cyclooxygenase pathway get activated, we can give the NSAIDs. But when there is lipoxygenase pathway activation, we must have to give the steroids. Then only the disease can be controlled. While the chemical cascade may not be visible, its end results are commonly seen clinically. Like papilla on the palpebral conjunctiva, the aggregations of eosinophils, subepithelial infiltrates of cornea are accumulation of polymorphonucleosides. AC cells in iritis are polymorphonucleosides. Now let us see some ophthalmic steroids. It is better to understand increased concentration of this drug is better than the increased doses. We have two kinds of preparations, local and systemic. In the local preparation, we have topical, periocular and intraocular. So let us see, we very commonly use eye drops and the ointments. Here is the 1% prednisolone is there, and this is also 1% prednisolone. And आदमी भूल जाता part is here. है, हम भी भूल The important पिछवा वहां part, से ऑन होगा is here. This is वैसे नहीं and suspension form, and this is the solution form, and this is ointment. Then what is the difference between suspension, solution and ointment? This is the basic part and main crux of the treatment of the treatment in ophthalmology. This prednisolone acetate, this is the acetate derivative. We usually remember prednisolone, dexamethasone, but we don't remember this acetate. This is a very important part of ophthalmic drug. This acetate is the lipophilic derivative, and this is lipid soluble. So this is the active molecule of this acetate or suspension is settled at the base of the bottle. Whereas this prednisolone phosphate, this phosphate is the hydrophilic. So the whole active ingredients will be distributed throughout the bottle. This ointment is made up of petrolatum. This petrolatum is nothing but petroleum substances. So this suspension should be shaken well before using the drops. Whereas if this solution need not to be shaken well before the use. So the advantage of the solution is whenever we are using for the surface, any inflammation of the surface of the eye, whereas suspension is used mainly for the anterior chamber inflammation. This ointment is giving more contact time with the cornea, but the less drug is available than suspension for penetration because this petrolatum drug do not allow the active drugs to release from the petrolatum. As an ophthalmologist, we should remember this slide. We have three kind of three short-acting, long-acting, and intermediate-acting drugs are available. First corticosteroid is the hydrocortisone, and intermediate-acting is the methylprednisolone, prednisolone, triamcinolone, deflazacort, dexamethasone, and betamethasone. Here, the most potent drug is the betamethasone and dexamethasone. Initially, we were using betlisol in the betamethasone. Now, the important point is here, prednisolone is 4 times more potent than the hydrocortisone. It has mineralocorticoid activity also. This mineralocorticoid activity increases the blood pressure, whereas dexamethasone and betamethasone do not increase blood pressure. And this is 25 times more potent than the hydrocortisone. And this dexamethasone and betamethasone is about 6 times more potent than the prednisolone. The clinical importance is this
prednisolone, although it increases the blood pressure, it do not cause much deprivation of the hypothalamo-pituitary adrenal axis deprivation. Whereas deflazacort is the drug of choice in the pediatric age group because it doesn't cause the growth retardation. And this is the drug which is used orally. When the drug is used topically, the scenario will be changed. See, here when we used orally, the prednisolone acetate was just 4 times potent, and dexamethasone was 25 times potent. And see here, when we are using topically, the prednisolone is more potent than the dexamethasone. So this is the main point to be discussed in this scenario. So we can choose which drug to be used in which condition of the ophthalmology. So how strongest steroid become weaker when used topically? I'm not able to scroll this. Yeah. This is the pharmacokinetics, the absorption, distribution, and metabolism which lead to changes in the potency of the drug from oral to topical. The very important barrier is the corneal epithelium and stroma. Cornea has 3 main layers: epithelium, stroma, and endothelium. Epithelium and endothelium is the lipophilic layer, whereas stroma is the hydrophilic layer. So any drug which is given topically, it has to cross through the epithelium, stroma, and endothelium to enter into the antechamber. So any derivative, any acetate derivative is lipophilic, which can cross easily with the epithelium and endothelium. So it will enter faster to the antechamber with a more concentration. So acetate and alcohol derivatives are more lipophilic and fat soluble, whereas sodium phosphate and hydrochloride is more hydrophilic and water soluble. So in intact epithelium, penetration of acetate derivative is greater, while in absence of epithelium, penetration of phosphate is greater. I think I'm clear, because the important point is here, acetate is lipid soluble, so it can cross cornea easily, whereas sodium phosphate is hydrophilic, so it cannot cross the cornea in presence of the epithelium. Let's take an example. Prednisolone acetate is 4 times more potent than the hydrocortisone, whereas dexamethasone is 25 times more potent than the hydrocortisone. But when we are giving topically, just 1 ml prednisolone, about 610 nanogram molecule is entering to the antechamber, whereas dexamethasone just 31 nanogram is entering into the antechamber. So this is the differentiating feature about the potency of the drug. So the common ophthalmic steroids, we have prednisolone acetate suspension, prednisolone sodium phosphate solution, dexamethasone, dexamethasone phosphate, fluoromethanol alcohol, and acetate. These are the available drugs for the available. Prednisolone is available in concentration of 0.5% and 1%. As compared with the other topical ocular steroids, 1% prednisolone acetate is generally considered the most effective anti-inflammatory agent for the anterior segment ocular inflammation. Prednisolone acetate 1% is considered the standard by which all other topical ocular corticosteroids are compared. It has the greatest efficacy when compared to all other available ophthalmic agents. So it is more likely to elevate IOP and have greater side effects than its weaker counterparts. Systemic preparations are, systemic recommendation is the tablet prednisolone acetate 1 milligram per kg body weight OD, and tablet ranitidine and calcium is given. Now we have available drugs for the prednisolone is the prednisolone acetate 1% suspension, prednisolone phosphate 1% solution. This is the Oroprate prednisolone
sodium phosphate, this is 0.5%, whereas predmide, prednisolone acetate, 0.12%. If any patient who is suffering from uveitis, so which drug we should give? Prednisolone acetate, prednisolone phosphate 0.5% or 1%, or prednisolone mild. So from above discussion, we came to know that this is the prednisolone acetate which is most lipophilic and can cross the cornea very easily and enter in the largest concentration to the anterior chamber. So this is the prednisolone acetate which will reduce the ocular inflammation in anterior chamber most. Whereas this is the prednisolone sodium phosphate, this is hydrophilic, so it can cross epithelial and endothelial layer of the cornea easily, so it will act more on the surface of the eye. Here is dexamethasone is also available. We have this is alcohol and phosphate derivative is available. So this dexamethasone is available as a solution. So it cannot cross cornea and corneal epithelium and the endothelium easily. So the bioavailability in the anterior chamber, it is less than the prednisolone acetate. We have Ocupol DX. This is the dexamethasone sodium phosphate. This is the again phosphate is there. So this is the hydrophilic component. So it won't enter much to the anterior chamber, but it will act well on the surface of the eye. This is a fluorometholone, structurally it resembles progesterone. This is the treatment of choice in those patients with the history of pressure eye due to corticosteroid therapy or previously diagnosed glaucoma. This is an effective agent in external ocular inflammations like conjunctivitis, pinguiculitis, scleritis, and episcleritis. It is available as 0.1% drops. So we have Flarex fluorometholone acetate 0.1%, and this is also available as an ointment. We have lotepredol 0.2% and 0.5% concentration. This is a less potent steroid and indicated in the temporary seasonal allergic conjunctivitis and anterior part of the corneal disease. We have betamethasone available as 0.1% eye drops or ointment. This is also sodium phosphate. So this is also hydrophilic, so it cannot cross cornea very easily. This is the first corticosteroid used in the medicine. It is available as 1% eye drops and 0.5%, 1%, 3% ointment. This is hydrocortisone acetate. So this is again this is the lipophilic, so it can cross easily to the cornea and the surface of conjunctiva also. So this steroid is the double S steroid. It only inhibits the inflammatory response, not the cause of inflammation. Now let us see the indications of steroids. Before going to the details, we should know the following general principles must be observed. A single dose, even excessive, is not harmful. It can be used to tide over motor crisis, even when benefit is not certain. Short courses, even high dose, are not likely to be harmful in absence of contraindications. Starting doses can be high in severe illness. Long-term use is potentially hazardous. Keep the duration of treatment and dose to minimum, which is found by trial and error. Even partial relief may have to be tolerated. Initial dose depends on the severity of the disease. Start with a high dose in severe illness, reduce gradually after the symptoms subsides. While in mild cases, start with the lowest dose and titrate upward. To find the correct dose, the dose should be reassessed from time to time. I'm not able to scroll it. You can click from the side panel slide. You can just open all the slides in the side panel and then click on the slide that you want to see. No abrupt withdrawal after a corticoid has been given for more than 2 to 3 weeks
it may precipitate adrenal insufficiency, infection, severe trauma, surgery, or any stress during corticoid therapy increases the dose. Use local therapy whenever is possible. Let us use our knowledge in the subsequent slides. Let's go to clinic. Any diseases of eyelids, what we should use? We have available is the ointments, intralesional and oral steroids to be used. See, this is the allergic blepharitis. What drug we should use in this allergic blepharitis? We have, either we can use the oral antihistaminics, but majority patients need local application also. So we have two ointments available, three ointments is available. One is the dexamethasone ointment, like Ocupol DX, Ciplox D. Second is the Teclosi hydrocortisone ointment or fluoromethalone ointment, which ointment should be used in this allergic blepharitis. Here I would suggest use the 1% hydrocortisone, because this is the acetate. This is available as an acetate, because this acetate is lipophilic. So this lipophilic, it will enter better to the dermatological in skin. Whereas severe allergic blepharitis, here also there is better penetration of the hydrocortisone. In atopic dermatitis, we will start with the hydrocortisone, then later we can shift to the dexamethasone. In case of neonatal hemangioma, we can use intralesional triamcinolone. For multiple chalazion, we can use intralesional triamcinolone. In allergic contact dermatitis, here also start with the hydrocortisone ointment, and then later we can shift to the dexamethasone. In the disease of the conjunctiva, there is early VKC. In the early VKC, we can use just olopatadine and lubricating drop, but in severe VKC, we should start with the loteprednol or fluoromethalone and wait for 1 week. If there is response is good, then we can continue the same therapy. Otherwise, we can shift to the stronger steroid like prednisolone phosphate or dexamethasone phosphate. This phosphate we should use for the surface lesion, because we don't want any effect in the anterior chamber. So if any drug which is entering into the anterior chamber, it will cause side effects also in the anterior chamber. So lesion is in the conjunctiva. So why we should give the stronger steroid which is entering into the anterior chamber? Same thing in the pinguiculitis, we can use like loteprednol or fluoromethalone. For the sclera and episcleritis, in the mild episcleritis, we should use fluoromethalone or loteprednol, because it's not enter into the cornea anterior chamber. In the resistant episcleritis, we can use prednisolone, but in lower concentration, or dexamethasone phosphate or betamethasone phosphate. So we won't have the side effects of the anterior chamber. In the diffuse anterior scleritis, nodular scleritis or necrotizing scleritis. For the diffuse and nodular scleritis, we should use the oral prednisolone, whereas in necrotizing scleritis, intravenous methylprednisolone is required. Now, this is a very important slide. In the corneal pathology, see, this is the pathology which is restricted to the just subepithelial. And here is your epithelial defect. This is the interstitial keratitis. Lesion is at the stroma, and this is the corneal edema with the decimate membrane fold. In which condition, which drug should be used? In nummular keratitis, lesion is at the just subepithelial and epithelium is intact. So we can use fluoromethalone acetate and loteprednol, because we don't want any effect in the stroma or in the anterior chamber. So just fluoromethalone acetate will work over here. But when there is chemical injury with epithelial defect, here we have to use the steroid. Which steroid to be used here?
Here we should use the dexamethasone phosphate or prednisolone phosphate because this is a solution. If we are using any suspension, this suspension will will be deposited here. The active molecule of the suspension will be deposited over the cornea and it will prevent the epithelial healing. So dexamethasone is a drug of choice or prednisolone phosphate is the drug of choice for the corneal inflammation in case of the corneal epithelial defect. In case of interstitial keratitis, here we need the drug which can cross the epithelium. The drug of choice is the either prednisolone acetate or fluoromethanol acetate. Here is the corneal edema with DM fold is there. Still, the inflammation is near the endothelium. So, here drug of choice should be the prednisolone acetate. So, the lesion, the presence of lesion at the specific area of the cornea, we are shifting the steroid to the, we are choosing steroid differently. In corneal epithelial defect, drug of choice is the dexamethasone. In interstitial keratitis, drug of choice is the prednisolone acetate. In the DM fold, when the drug of choice is the prednisolone acetate. In nummular keratitis, drug of choice is the zolpidem or fluoromethanol. Similarly, in the PRK, we are ablating in PRK, we are ablating the epithelium. So drug of choice will be dexamethasone, where in case of LASIK, we are making just a flap. So the drug of choice will be the prednisolone. In case of uvea, we have anti-uveitis, intermediate uveitis and posterior uveitis. In case of anti-uveitis, drug of choice will be prednisolone acetate because it enters most in the anterior chamber. And the dosing will be depending on the severity of the anti-uveitis. Here, intermediate uveitis, in the intermediate uveitis, lesion is at near the pars plana. So, topical drops usually don't work. So, we should give the posterior subtenon injections for this. And for the posterior uveitis, we should give the oral steroids. Now, the very important thing is the post-cataract surgery. We have done phaco surgery or small incision cataract surgery, and we saw next day morning we saw this 4 clinical scenario. One is the AC is very quiet, cornea is very clear in the first POD. Second scenario is there is mild to moderate inflammation in the AC, there is moderate corneal edema, and here is a severe inflammatory reactions in the anterior chamber. And this is the TAS. So, in general, people are using for any cataract surgery, we are giving the prednisolone acetate or dexamethasone. Is there really required in this case? In the first case, when cornea is clear and quiet, here only NSAID is more than sufficient to control all the inflammations. But in this case, when there is mild to moderate inflammation in the anterior chamber, and there is corneal edema, we should give the prednisolone acetate. It starts with 4 to 6 days only, which is sufficient. And after 1 week, we can taper the dose and we can shift to the NSAIDs. But in case of the severe inflammation in the anterior chamber, we should give the hourly drop of the prednisolone acetate. Here is the drug of choice is the prednisolone acetate. In case of TAS, we should give the prednisolone acetate as well as oral prednisolone acetate. With the clear-cut surgery, only NSAIDs, few cells and flare, go for the prednisolone acetate 1%. If more cells is there, then 1% prednisolone acetate hourly and later taper accordingly. And this is the most abusing drug in the cataract surgery. We are very frequently using this steroid with antibiotics. When there is no infection, we are just giving for the prophylaxis. For the any cataract surgery or small incision cataract surgery, SICS, what cornea regenerate, maximum time cornea takes is the 4 days to regenerate. But
dexamethasone we are giving for 1 month. Here, the need of the drug is the dexamethasone, but moxifloxacin also we are using for 1 month. This is the useless. So we should always give separate drugs, separate antibiotics, and the separate steroids. So for the 1 week, antibiotics is more than sufficient, and for 1 month we need dexamethasone, betamethasone, or prednisolone. When there is inflammation with glaucoma, then what we should do? Locally applied drops are more notorious in glaucoma than we can give the fluoromethalon or lotepronol with NSAIDs. But in case of severe, here drug of choice is the dexamethasone, not the prednisolone. Why? Because we came to know from the earlier slides that dexamethasone comes as a phosphate, which is the solution. So there is less penetration to the anterior chamber. So it will act more on the surface. So the side effects will be less. Similarly, in diabetic macular edema, we can give the intravitreal triamcinolone. For optic neuritis, we should give methylprednisolone and then prednisolone. For the pseudotumor, oral prednisolone. Now, the important thing why I kept this slide, still many people are using this prednisolone acetate in divided dose. This alternate day therapy is very important nowadays, and majority of us, we should use this alternate day therapy or single OD therapy. Why? Because single dose of alternate day systemic administration of corticosteroid is as effective as divided dose daily. Patient receive the entire total dose that would be given over 2-day period in a single dose every other morning. It permits metabolic recovery and prevent toxic side effects from accumulating. Alternate day systemic therapy applies only to shorter acting systemic steroids like prednisolone in case of chronic uveitis. Why to taper local steroids? We know very well that. So take home message is steroid is not a very harmful drug as we think. Understanding of mechanism and pharmacology of steroid will give more therapeutic effect and less side effects. We should know that which steroid will act well for ocular surface, anterior chamber, posterior segment with less side effects. Thank you. Thank you so much, sir. That was really very hard to cover. I think all the uses of steroid from anterior segment to posterior segment in such a short time, but you really did a wonderful job with a comprehensive coverage. So thank you for that wonderful talk. Just I'll take a minute to welcome our esteemed guests, Dr. Milind. On behalf of Shahabad Ophthalmic Society, I would like to welcome Dr. Milind Kumar sir, President BOS, Dr. Satyajit Sinha sir, CSC BOS, Dr. Sanjay sir from Bhagalpur, Dr. Anil Kumar sir from Patna, Dr. Dinesh Bhagat sir from Kosi region, and Dr. N.K. Jain sir from Chhapra. Thank you sir for joining us, and we will like to hear your thoughts as well once we are in question and answer session. Thank you so much. And KL sir, if you can stop sharing the screen, then we can move ahead with Sudhanshu's talk. Dr. KL, I would just like to know about VKC. You said to use lotepronol for only 1 week. When we have the question answer session after the second talk, because all the 2 talks are relevant with the steroid. Okay. Yes, sir. Agreed. And Dr. KL, please be there with us. To Yes, sir. answer the questions. Yes. Yes. So I would like to welcome Dr. Shatanshu Mathur sir, who is Honorary Secretary of SARC Community Ophthalmology, Chief National Coordinator for ISMS-ICS, Honorary General Secretary of NZOS and UKSOS, and Chairman Scientific Committee of ACOIN. He is Joint Secretary FBS AIOS and Executive Member of IIRSI and State Representative to AIOS. Actually, sir doesn't need any introduction, and but it was my job to invite him for the talk. Thank you, sir, for joining us, and we are waiting for your talk on untoward effect on steroids in ophthalmology. Thank you. Thank you. Shahabad Ophthalmic Society is just like a family for me.
And really we congratulate Dr. Sushil and all the office bearers for regularly organizing the meetings and webinars. I think this is 35th or 37th as Dr. Sushil was saying. This is remarkable for you. Big applause for you, all of you. Dr. KL very appropriately covered all these effects of the steroids. Definitely. Every coin has two aspects, positive and negative. We should know how to use judiciously what thing. And he has covered very well about all the pharmacology of the steroids. And if we use the judicially on these steroids, there's nothing, no harm effect, no side effects. We can have better results without any disadvantage. Dr. Sushil asked me to speak against about the side effects of the steroids and ocular side effects. And I would like to say there's nothing much in better. We all know about the side effects of the steroids. But just to summarize, I want to say, as effective as they are therapeutically, they are heavily polluted with side effects. And we should know, Dr. KL has said, how to use them, in which case, which type of steroid should be used. This is very important. In ophthalmology, steroids are predominantly used for treating inflammation, autoimmune, and infection diseases. This picture is very well appreciating the KL that once you fire with the steroid, it treats this target is accurate. You treat the disease, but sometimes it bounces back to you. So you should be careful that does not bounce back to you. Routes of administration already discussed by Gail, so I am not going to discuss with it. What are the factors influencing the adverse effect of steroids? This is very important. He has already summarized it. Dose and duration of therapy are the most important. High dose, long duration, side effects are bound to occur. That's why always used to taper the steroids. Whenever we give a high dose, then we will taper that dose. Then age factor. If the patient is older age, chances of side effects are more. Comorbid conditions such as diabetes mellitus, they can increase the chances of sugar level in the patients. Concomitant use of other immunosuppressive agents make patient weaker and chances of side effects are more in such cases. So severity and nature of the underlying disease, they also helps in making us aware that in which case we should use what type of steroid and which dose, and then poor nutrition status. If the nutrition status is poor, we should keep in mind not to use higher dose of steroids for more duration. There are systemic side effects of oral steroids, which I am not going to discuss. These are not my job. Then steroid eye drops have some systemic effects also. We know steroids have effect on the eye, but systemic effects are also there by the steroid drops. Oral, we have so many side effects by the oral steroids, but by the oral eye drops also we have some side effects like reduced plasma level and Cushing syndrome. Ocular side effects, this is more important for all of us. Cataract, glaucoma, ocular hypertension, especially open angle glaucoma, great content for healing, retinal choroidal emboli, CSR, increased susceptibility to ocular infection like keratitis, corneal thinning or melting, and scleral thinning. These are common side effects. Cataract. Long-term steroid use, we all know, is associated with the accelerated development of cataracts. What is the mechanism? It is not well understood. It is thought to involve steroid-induced changes in gene transcription within the lens epithelial cells. Or typically, the cataract associated with steroid is called posterior subcapsular cataract. But it is not with a low dose. It is for the long dose, high dose for the long duration used. Then we can find out posterior subcapsular cataract in patients. Then glaucoma is another most important side effect of the oral dose steroids. What is the mechanism? Steroid use can cause increase in IOP by increasing the ocular extracellular matrix protein. It increases the proteins outside in the ocular area and thus increase the resistance to the outflow of aqueous. So outflow of the aqueous is restricted and that causes the raise in the IOP. What are the risk factors? In addition to genetic determinants,
If the patient has pre-existing primary open-angle glaucoma, we should judicially use the steroids. This is the study. After 2 months treatment with topical steroid, IOP rises in 76% of patients with known glaucoma and only 15% patient with no glaucoma history. So when patient has glaucoma, we should judicially use the steroids. History of increased IOP with previous steroid administration. Patient is steroid sensitive, we should use steroid very judicially. Diagnosis of type 1 diabetes, we should avoid the steroid for long duration, and very young patient or very old patient, we should take care that chances of glaucoma are there. Initially, IOP rises are reversed by stopping the steroid drops. Before permanent damage occurs, we can reverse the process. But if the steroid are continued, the optic disc atrophy and field changes are bound to occur. So patients who are taking steroids long term should be regularly evaluated by ophthalmologists for IOP changes, and consideration for non-steroid medications should always be made. So we should always tell our colleagues, physicians, surgeons who are giving steroid to the patient that they should refer the patient once in a month if they are for long-term steroid, especially in the nephrology cases for IOP monitoring. This is our duty to tell our physician colleagues. Then another side effect is delayed wound healing and risk of infection. Research has identified that steroids inhibit growth factors critical in wound healing, and this causes the delayed wound healing. Without co-treatment with antibiotics, local ocular infections that are treated with steroid may become worse, especially viral infection, herpetic keratitis, and also fungal bacteria. We all are working in a place where a lot of patients come to us with a fungal viral ulcer treated by quacks. They take the medicine by medical store, steroids, mostly steroids. And especially the fungal cases, you see, when patient come to us, he has a very bad condition, he has hypopyon, everything. So delayed wound healing and risk factor steroids should not be given in cases of any corneal disease, SS and per when indicated, as Dr. KL has already told you. Then CSCR. This is another common in middle-aged males with type A personalities and psychological stress patients with the use of topical, systemic or inhaled steroids. The mechanism is unknown, but recent evidence implicates a retinal mineralocorticoid receptor, that MR, that may mediate the effect with fluid retention, that causes the fluid retention, and that raises the possibility of MR. And that is another good thing, that is possibility of the MR antagonism, if we can find out, that can be the treatment for non-resolving CSCR. So central serous retinopathy is found in steroid use cases, and the cause can be MR receptor. And if we can find the drug that can antagonize it, we can treat it. So what is the recommendation we should give? Topical steroid should never be given for an undiagnosed red eye. We should not use steroid in each and every case until and unless we found indication for it. It is recommended by Royal College of Ophthalmologists. Slit lamp examination is must for any patient who requires prescription of topical steroids. So it should not be used by the quacks, or it should not be used by a person who is not using the proper slit lamp. Ophthalmic opinion is mandatory for any patient on long-term oral steroids. That is why I told we should ask our friends, our colleagues, physicians to send the patient for ophthalmologist for regular IOP measurement. Thank you very much. Thank you so much, sir, for comprehensively covering all the side effects from systemic to oral. And I would like to have comments from our guest panelists, Sudhir sir and Ranjana ma'am, before we proceed with question answer session. Ranjana ma'am. Thank you, Dr. Sudhanshu, for your summarizing. And it has been such an exhaustive workup of steroids in ophthalmology by Dr. Ma'am, you went on mute. Ranjana ma'am.
It has been such an exhaustive presentation that nothing really is left to be discussed. Dr. KL has discussed almost every aspect of steroid use in ophthalmology, and Dr. Mathur has discussed the side effects. However, of course, each one of us have our personal preferences, and despite so many advisories, all of us have our own way of treating all the diseases that we encounter. So far as cataract surgery standard is concerned, if all the prescriptions I see, I have seen a lot of, almost a majority of people using combination drugs, in the sense that steroid antibiotic combination is the preferred one, mainly because it's cheaper as well and easily available and affordable for the patient. However, as far as my personal preference goes, I would like to taper the antibiotic over a 15-day period and use a steroid independently. But a combination has worked for so many people, mainly because in a solution form, they see that the patient feels that there are no deposits and they prefer it in a way. However, it has not worked for me. So far as ulcers are concerned, viral keratitis, another gray zone where you really have to be very judicious. And I would like to hear what Sudhir sir has to say about use of steroids in viral keratitis. So these are, please. Thank you for giving me this opportunity. I really thank Dr. KL Agrawal and Dr. Satanshu for such a nice presentation. It was basically, there is nothing much to discuss, but one thing I always think that it is the steroid which distinguishes us from any quack. It's the knowledge of steroid, because this is a wonder drug in each and every aspect of our treatment, because it is very much wanted in cases of crisis, when this is the most important drug, when it becomes most important drug. And at the same time, this is a dual-edged sword. You will have to learn the use of steroid as a nai, that is barber, uses his ustra. Because if you are not well versed with the use of ustra, you can cut your neck with that while saving yourself. So this is a wonder drug, and you will have to know the exact use and judicious use of this drug, either in oral form, injectable form, and for us in topical form too. So we are using it day and night. I think after neurosurgery, this is the only department in which steroid is used after surgery. In no other department, orthopedics, surgery, general surgery, gynecologist, nobody uses steroid just after the surgery. It's the only us. It's because eye is very sensitive organ, and it causes the inflammation. Any surgery or any insult causes the inflammation. So, but many a time you will find that there is a clinically disease situation when you will find that if we use steroid, we are going to have two common problems, that is infection as well as liquefaction of the tissue. Especially in cases of injuries like chemical injuries, there is two things going. I'm not going into the details of pharmacological, that is cyclooxygenase and lipooxygenase pathway. Just for the thumb rule, in the first 10 days when you are using steroids in any chemical injury, it's beneficial because it reduces the inflammation and further damage. But after that, it delays the healing. So you'll have to use it for the first 10 days. And after that, you will have to postpone or use it sparingly. Similarly, if you are doubtful about the bacterial infection and any other inflammatory, non-infective inflammation, then again you have to use again with the caution. So what I do is I start antibiotics or antiviral, if it is a viral disease, if it is a viral conjunctivitis, or if I think this is the person is having cataract surgery,
a person needs cataract surgery, and he was having a herpes zoster few months back also. So I need to use antiviral at that time, because steroid is needed for cataract surgery, while herpes will get reactivated with the use of prednisolone or any steroid. So under cover, we should use, especially whenever you think that there is infective infection because of either virus or bacteria, as in endophthalmitis also. We are using steroids because there it is needed also to prevent the inflammation and blindness. But at the same time, you have to be cautious to cover this for the bacteria or fungus. And so you have to cover this. And for that, we can use a steroid challenge also. If you are doubtful about the endophthalmitis or inflammation, many a time we use a steroid for a challenge. If it increases, it means that bacterial infection might have increased. But for most of the time, covers would be given with the proper microbiological tests. Thank you. Thank you so much. Milind sir wanted to make a point. Sir, please. I have to inform two things. First, for KL, he is a very good junior among all of us. And he is a very good golf player. I think he is the only BOS member who is a golf player. Secondly, I have a simple questions to him. गोल्फ जो है ना रईसों का, गोल्फ जो है वो रईसों का खेल है. Yes, he is a Rais. He is a Rais. And the second questions to the house and especially care. We use corticosteroid in marginal corneal ulcer. एकदम. What precaution one should take? Because I have faced a very bloody situation in 1993 when I used corticosteroid. And one of my colleagues used the word, "Arey, ये तो आँख में ulcer हो गया है, corticosteroid चलाना नहीं चाहिए था." What precaution one a clinician should take? Care, please. Sir, first we have to differentiate. Then Sudhir will say something. Sir, first we have to differentiate whether inflammation is located where. If it is located just and Marginal corneal ulcer is diagnosed. Now Yes, sir. you have to do corticosteroid. What yes, sir. paper you have to take the defense? I'll start either my favorite drug is the loteprednol. I'll go start with the loteprednol along with lubricating drop, sir. So lubricating drop will epithelial healing, whereas this loteprednol will reduce the inflammation. So my drug of choice will be loteprednol with lubricating drops. Any other drug for fungal, bacterial, anything else? Sir, marginal corneal ulcer is usually sterile, sir. Usually Sterile. staph. It is trial, but caused why? Because this is usually immune related inflammation, sir. Okay. What precaution one should take in the prescription pad? Sir, You are writing marginal corneal ulcer, and you are. if you are not sir, if you are not sure about the diagnosis whether this is the infective or non-infective, we must go for the microbiological test, sir. Yeah, okay. We have diagnosed marginal corneal ulcer on your clinical sense. What precaution you will take in the prescription? So there, please. सर हम तो हर दिन बुला के देखेंगे उसको. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि स्टेरॉइड स्टेरॉइड देते हैं तो लीड एक का एक दो दिन लीड तो का सबको बुला ही लेता है कि भाई आ जाओ देख लें क्या है, सुधार है कि नहीं. जी जी
एग्जैक्टली सर, उसमें कोई डाउट Genuinely, नहीं। लीड के लिए हम जरूर एजिथ्रोमाइसिन यूज करेंगे सर साथ में। this is my और बाकी for तो medical legal value, nothing else. Because I faced one problem in my last 22 years. डॉक्टर जी सर, मिलिंद का क्या- कहना है कि जैसे मार्जिनल कॉर्नियल अल्सर था, उसमें ये स्टेरॉइड चलाए, किसी ने कमेंट किया कि ये तो कॉर्नियल अल्सर था, आप क्यों चला दिए इसमें। अब वो चौपट मेडिकल कर दिया। लीगल के लिए प्रिकॉशन के रूप में प्रिस्क्रिप्शन पर और कुछ लिखना चाहिए या नहीं, Yes, this is my point. मेडिकल लीगली सर आप वो आदमी को छोड़ Guarded दीजिए। prognosis explained. नहीं, प्लीज रिपोर्ट इमीडिएटली इन केस यू हैव एनी ट्रबल, बस वही बात है और कुछ नहीं। Follow स्टेरॉइड up शुड on नॉट so बी and so or SOS. सुपरवाइज्ड देना है, स्टेरॉइड ट्रीटमेंट बस अपने आप से नहीं चलाना है, ये तो लिख ही देना है सर। ये तो बुक में रेफरेंस है ना कि मार्जिनल कॉर्नियल अल्सर में स्टेरॉइड मार्जिनल केराटाइटिस में सर बोला गया है कि अगर एपिथेलियल डिफेक्ट नहीं है तो स्टेरॉइड आप टॉपिकल स्टेरॉइड मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर एपिथेलियल डिफेक्ट भी है उसमें तो आप एंटीबायोटिक कवर के साथ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कवर आप दीजिए उसके साथ, और मॉनिटर कीजिए एकदम रेगुलरली, फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग कीजिए, और जैसे ही आपको लगे कि है तो स्टेरॉइड आप पेपर करें और उस पर वॉच रखें। अगर कहीं भी रहता है, लगता है कि आपका वो इन्फेक्टिव उसमें कंपोनेंट आ गया है तो फिर आप बंद कर दीजिए। Dr. Sushil, medical legal point of view say there is no problem in treating the marginal Colles ulcer with mild steroid in low dose because it is recommended in books, highly in academics. So it is no problem. You have to write down the diagnosis over it. This is marginal corneal ulcer with infection, supinated infection, or without supinated infection. Without infection. If supinated infection, right, you have to give the antibiotic. Otherwise, you can give only steroids and the lubricants and what you want to do. But you have to write down the diagnosis, then you are safe in the medical legal. बिल्कुल। Yeah. And So, additionally, you can write regular follow. Yes, And sir. regular follow-up. And Sudhir is very right. Whenever in ulcer case you give the steroids, sometimes we get the ulcer which is not healing, non-healing ulcer. Then we give mild dose of mild steroid. And then we have to call the patient alternate day to see that his condition is worsening or not worsening. Dr. Sudhir, there is one word, soft steroids. And by soft steroids, I mean the lesser penetration, lesser intraocular penetration. These are so, and lesser side effects. You lesser agree with this? potency too, sir. Lesser Weaker potency. steroid है sir. Weaker Yes. steroid. Weaker Mild steroid steroid. means what? On surface it is more Chloromethadone. potent. On the Whatever. surface it is more potent and intraocular penetration is less. That's why side effects, undesired effects are less. That you Yes. mean. Soft steroid. Yes, sir. Fluoromethanol and loteprendol. क्लोटिप्रोन फ्लोनर क्या बोलते हैं? Fluoromethanol. Sir, we usually use the term prednisolone and dexamethasone. Sudhir, We forget to use acetate and phosphate, which is the main part which make the drug more potent or less potent. So by your talk, it is what point we get is if you want intraocular penetration more, you must use lipophilic acetate, and if you want more action on surface, lesser penetration intraocularly, that should be phosphate. Sir, in prednisolone we have acetate and phosphate, both drugs are available. Yeah. Usually see 1% prednisolone is available. Whether it's the acetate or phosphate, we must look for it. Yeah. If AC inflammation is there, go for the 1% prednisolone acetate. If we want just action on the surface, go for the 1% prednisolone phosphate. सर इसमें एक थंब रूल बहुत सिंपल है, केएल अग्रवाल ठीक ही बोल रहे हैं कि all the cell membranes are made up of lipoproteins. So any drug which is lipid in nature will enter into the cell. So prednisolone acetate will have more penetration into the anterior chamber through the more penetration in the epithelium as well as through endothelium and stroma, and it will also be more effective in the cells which are inflamed. And but for surface in which you don't need the drug to penetrate inside, you can use phosphate variety or any ionated. Yeah.
Or sir, phosphate, all these hydrophilic drugs, they are available as suspension. So they Yes. act as like the crystal, they get deposited in the Solution. cultisated, they are like depot, small depot, so they have longer duration of action because of that. Yes, yes. So, sir, I think everybody talked about combination therapy, steroid with antibiotic, and I just remembered one talk that was from L. Vijaya ma'am from Shankar Netralaya, and she was dead against use of steroid with antibiotic, because what she told, except we are over prescribing antibiotic, when we are tapering, the antibiotic doesn't need that much tapering. And we keep on giving moxifloxacin for one OD or BD for like 1 or 2 weeks, and then it introduces antibiotic resistance. So what is the opinion of house on this, like the No, combination drug? it's better to use both the drugs separately. But it is, as Dr. Ranjana said, it is the cost primarily. This affects the prescription. But it is better to use separately. Cost and patient compliance also. और patient को लगता है कितना drop कीजिए ताकि साहब पूरा लेकिन दिन हाँ, तो drop पे ही लेकिन चला ये जाए। भी जरूरी अलग-अलग है use कि करना है। एंटीबायोटिक 15 बहुत लंबे समय तक जाने से नहीं, उसकी नहीं। एफिकेसी आप कम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों के पास फोर फ्रंट में मॉक्सिफ्लॉक्सासिन ही है, अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग को जुडिशियसली इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में हमारे अपने मरीज ही उससे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ वी यूज दैट ऑन द पेशेंट्स एंड हाउ लॉन्ग इज इट नेसेसरी। जितना जरूरी है उतना ही दीजिए, होना तो यही चाहिए। एक चीज और हो सकता है कि अगर कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हैं तो आप 1 वीक या 10 दिन दे के उसके बाद आप केवल एंटीबायोटिक हटा दीजिए, ड्रॉप पे सिर्फ चले स्टेरॉइड जाइए। दीजिए। हाँ, अगर कॉम्बिनेशन यूज करना ही है तो शुरू में तो सर एंटीबायोटिक देना ही है ना, फिर एक लेकिन- एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, एक लेकिन- स्टेरॉइड भी हाँ, दे रहे हैं। मैम- हफ्ता चला के बंद कर दीजिए एंटीबायोटिक। Normally- मैम ने ये पॉइंट सही कहा कि ये Dr. एंटीबायोटिक Sushil, normally- मॉक्सी का मिसयूज नहीं होना चाहिए। राइट। Normally, Dr. Sushil, normally antibiotics are not required after a week nowadays in phaco surgery. So even if we are giving the combined drops, normally we call the patient next day and we call the patient after 7 days. Even if we give the antibiotic and combination, after 7 days you can stop the antibiotic and combination and can give the oral prednisolone, topical prednisolone only. Sir, Milind, sir. scientifically speaking, Yes, sir. Sushil sir, Yeah. scientifically speaking, these two drugs, antibiotic and steroids, are for two different targets. Right. Their aim is different. So their commencement and ending will be different and their requirement will be different. So we should use two different drugs as far as possible, because scientifically we must know the real mechanism, how these drugs are going to act. Then only you can use it for your advantage. If you are concerned about the cost, then again go for combined drug for first week, and then go for steroids. वही this is the ideal one. डेक्सामेथासोन चूंकि अनस्टेबल रहता है, इसलिए उसको कॉम्बिनेशन में यूज करना, इंट्रोड्यूस करना कंपनी की मजबूरी है, और जिसकी वजह से हम लोगों को वो प्रोडक्ट दिया जा रहा है और हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो एलर्जी का बहुत पेशेंस होता है, वो भी लोटेप्रेडनोल एंटीबायोटिक के साथ ही डाल रहा है, एंटीबायोटिक भी डाले जा रहा है 2 महीना 3 महीना से। ये हम लोगों का पैटर्न ऑफ प्रैक्टिस पैटर्न है, रादर देन की एडवाइज्ड है। इट इज नॉट एडवाइज, नॉट एट ऑल। वही बोल रहे हैं कि हमारा प्रैक्टिस पैटर्न है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड। Dr. Ranjana, I totally agree with पास you. तो कंपनी वाला भी आता है तो हम लोग को बोलते हैं कि तुम प्लेन लोटेप्रेडनोल क्यों नहीं लाते हो यार, हर दवाई एंटीबायोटिक के साथ क्यों लेके आते हो, लोटेप्रेडनोल के साथ अब एलर्जी में एंटीबायोटिक क्यों दे? Dr. Ranjana, सर प्लीज। yeah, totally agree with you. ये हमने अपना ट्रेंड बना लिया है. हाँ, We sir. appreciate the efforts of the Shehbaz of society to bring this topic for discussion. ये हम लोग अपना ट्रेंड बनाया है. We are misusing the drugs basically. All the drugs. बिल्कुल, यस सर। सर चूंकि एंटीबायोटिक एक ऐड करके हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सेफ साइड पे है, अगर कुछ हुआ तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने एंटीबायोटिक कवरेज दिया है उसको। Yeah, post इसकी वजह से हम लोग एपिस्क्लेराइटिस से लेकर के जितनी भी चीजें जिसमें जरूरत नहीं है एंटीबायोटिक की, हर जगह एंटीबायोटिक है और रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हमारी वजह से हो रहा है। लेकिन वही बात है कि पेशेंट, प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट रेगुलरली फॉलोअप में नहीं आता है। अगर आप उसको बुलाते हैं तो अपनी मर्जी से और अपनी सुविधा से आता है, और जब उसको दिक्कत होती है तब आता है। इसलिए मोस्ट ऑफ अस आर फोर्स्ड टू यूज दिस कॉम्बिनेशन। या हम लोग सोचते हैं कि उसको करने से
कम से कम कोई परेशानी नहीं होगी डॉक्टर को। तो दोनों तरफ से ही वो बात है। तो इसमें वही है मैडम कि थोड़ा सा काउंसलिंग, थोड़ा हम लोग और टाइम दे काउंसलिंग पर, तो पेशेंट समझ जाएगा कि उसके लिए बेहतर क्या है। एक बात हम थोड़ा सा और जोड़ना चाहेंगे कि कैसे रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करता है। Basically, when we are using any antibiotic, most of the bacteria which are sensitive to that bacterial strains which is sensitive to that antibiotic will be killed. But at least less than 1% or 1% of the bacteria will not be sensitive to that particular antibiotic. और वहां पर उसको रोकने के लिए, इनहिबिशन के लिए कोई दूसरा बैक्टीरिया नहीं होगा उसके जात का, उस स्ट्रेन का। तो होगा क्या कि उसका संख्या बढ़ते चला जाएगा और एक नया रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंट वैरायटी of bacteria which is resistant to that particular antibiotic will be more in number in the conjunctiva or anterior chamber. So that is going to lead to resistant strain of that bacteria. So that will not be again sensitive to that particular antibiotic. So we should avoid any antibiotic use for longer term. नहीं तो क्या होगा, अगर देना भी है लॉन्गर टर्म तो आप इंटरमिटेंट दीजिए ताकि वो फिर से दूसरा कमेंसिल आ जाए या फिर उससे सेंसिटिव बैक्टीरिया वहां पर आ सकता है तो आ जाए। सबसे अच्छा होगा कि जहां तक हो सके हम लोग डायग्नोस कर सकें कि ये इन्फेक्टिव है या नहीं इन्फेक्टिव है, जितना संभव हो सके, चाहे कल्चर मेथड से, चाहे केवल स्लाइड्स के ग्राम स्टेनिंग से, चाहे जिससे भी आप कर सके। ये बहुत जरूरी है कि जितना ग्रे जोन में हम रहेंगे और जितना सोचेंगे कि पता नहीं क्या है, तो उतना आप मिसयूज करेंगे, क्योंकि अपने कम नॉलेज के चलते। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम ही लोग हैं, डिस्पाइट एवरीबॉडी नोइंग दिस, बहुत कम जगह हम लोग कल्चर का सेंसिटिविटी करने के बाद हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर 100 में से 98% लोग हैं जो कि एम्पेरिकली ही ट्रीट कर रहे हैं। एक या तो सुविधा नहीं है या रिपोर्टिंग बहुत पुअर होती है, और स्पेसिफिक ऑक्यूलर पैथोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में रिलेटिवली इजियर है। बाकी जनरल प्रैक्टिशनर के लिए ऑक्यूलर पैथोलॉजिस्ट उतने सेंसिटिव नहीं है ना। वो आप अगर सैंपल भेजते हैं तो स्टेराइल नो ग्रोथ करके और पेशेंट फल्मिनेंट एंडोफ्थेल्माइटिस में चला जाता है और वो स्टेराइल नो ग्रोथ ही आता रहता है। इसलिए सर ये इतना ग्रे जोन है कि हम लोग फोर्स्ड हैं यूज करने के लिए जो दवाएं हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कल्चर सेंसिटिविटी नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर भी हमको तो आज तक ग्रोथ आया ही नहीं है, हर में नो ग्रोथ ही लिखा रहता है। वो अपना क्लिनिक का ग्रोथ रहता है बॉस। डॉक्टर मिलिंद वांटेड टू मिलिंद सर प्लीज, मिलिंद सर मेरा प्लीज। एक क्वेश्चन केएल से है, फिर बाद में हाउस से है। Usually we see a prescription post-operative of the cataract surgery. One is writing prednisolone, someone is writing dexamethasone. KL, what is your opinion? सर क्या बताया सर आपने? पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी से वैलिड प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, डेक्सामेथासोन भी है, प्रेडनिसोलोन भी है, एवरीबॉडी इज राइटिंग देयर ओन प्रिस्क्रिप्शन। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड और व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रैक्टिस? What is your say? Then we'll talk to the house. सर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ये दे क्यों रहे हैं सर? डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन हम दे क्यों रहे हैं? यहाँ पे बेसिक पैथोलॉजी एंटी चेंबर इन्फ्लेमेशन के लिए। Question is not. अगर एंटी चेंबर इन्फ्लेमेशन नहीं है तो look KL, it's a कैटरेक्टवा के बाद तो देवे आदमी यार। surgery. We give it to the patient. We never see what is. हर एक आदमी की अपनी एक है जो प्रेडिसोन लिख रहा है, हर एक आदमी का है जो डेक्सामेथासोन लिख रहा है। What is the rationale behind it? I'm asking. He's explaining that. सर अगर केस क्लियर कट है आपको अगर डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन ही देना है तो आई विल प्रेफर डेक्सामेथासोन, क्योंकि सर डेक्सामेथासोन जो है इसका कंसंट्रेशन एसी में बहुत कम होगा, तो कम होगा तो इसका साइड इफेक्ट भी कम होगा। प्रेडनिसोलोन क्या है, इसकी एंट्री एसी में बहुत ज्यादा होती है, तो इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होगा। तो अगर आपको केस क्लियर कट है और एंटी चेंबर क्वाइट है तो अगर दोनों में से एक चूज करना है तो गो फॉर द बेटनिसोन, बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन। लेकिन अगर एंटी चेंबर इन्फ्लेमेशन ज्यादा है तो फिर हम लोग को सर बेटनिसोल एसीटेट देना पड़ेगा। Normally we don't see it. We have a prescribed formula. The operation हुआ डेक्सामेथासोन दो या प्रेडनिसोन. It's a typical
मतलब कि हर सर्जन का अपना एक मूड है। नहीं, तो प्रेसिडेंट साहब, डॉक्टर केएल का क्लियर कट मैसेज है कि अब आज के बाद हम लोग उसको देखें कि इज देयर एनी रिएक्शन इन एसी, इज देयर एनी समथिंग इन एसी, तब तो उसमें प्रेडनिसोलोन एसीटेट दे। अदरवाइज इफ द आई इज क्वाइट तो उसमें डेक्सामेथासोन दे। और दूसरा, मैडम का ये मैसेज बिल्कुल क्लियर कट है, और डॉक्टर केएल का भी, कि कॉम्बिनेशन थेरेपी से बढ़िया है हम लोग अलग अलग दे, रैम्पेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक नहीं करें। और ये बात होनी चाहिए ना कि क्वैक्स में और हम लोग में डिफरेंस तो होना चाहिए, और स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक का अलग अलग दें। उसमें बहुत कॉस्ट, जब हम लोग 10,000, 20,000, 30,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं कैटरेक्ट में, और 600 रुपए के अब ड्रॉप्स का मतलब उसमें ये करेंगे तो नहीं होगा। उसमें दोनों यूज अलग अलग करें। डॉक्टर सुशील, यहाँ पर एक और बात है। डॉक्टर सुशील, इसमें दे वन थिंग इज वेरी क्लियर, KL always specified we should give the separate drugs. Already most of the doctors are giving the separate drugs. Number two, patient come for the follow for the second day to get the bandage open or checkup. So ideally to give the prednisone acetate, because you do not know patient will come tomorrow or not come tomorrow or day after tomorrow. So always give prednisone acetate for a week and then see if the results are good, there is no reaction and the chamber, then you can taper it readily. But if you give dexamethasone, then if there is a reaction of second day, third day, patient does not come to you, that is a problem. सर एक चीज कहूंगा कि हम लोग मेजॉरिटी ऑफ लोग अब क्या करते हैं, NSAID भी ऐड कर रहे हैं। Not needed initially. बट NSAID भी ऐड कर रहे हैं टू प्रिवेंट द CME। तो उसमें अगर हम लोग वीकर स्टेरॉइड भी दे साथ में और NSAID भी दे, तो मुझे नहीं लगता कि प्रेडनिसोलोन की फिर जरूरत पड़ेगी। But why can't we give steroid for 7 days that we can taper to the NSAID after 7 days? सर हम लोग दे सकते हैं, बट जितने भी स्टेरॉइड अभी मुझे 2 महीने पहले एक पेशेंट मेरे पास अपने फेको किया था, ही बिकेम स्टेरॉइड रिस्पॉन्डर, जबकि उसका केस क्लियर कट था और मैंने उसको प्रेडनिसोलोन दिया। सर अगर मैंने प्रेडनिसोलोन नहीं दिया होता, उसकी जगह पर डेक्सामेथासोन दिया होता, तो पेशेंट स्टेरॉइड रिस्पॉन्डर नहीं होता। सर वो यहाँ पर डॉक्टर केएल एक बात हम जोड़ना चाहते हैं, स्टेरॉयड रिस्पॉन्डर्स कौन है? बेसिकली स्टेरॉयड रिस्पॉन्डर्स आर दोज पेशेंट्स हु आर गोइंग टू बी ओपन एंगल ग्लाइकोमा पेशेंट, और या तो वो माइल्ड ग्रेड के हैं या अभी मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं। और आप अगर आप मतलब मैंने हर पेशेंट में 2 वीक के बाद IOP लेता हूं, और जानकर आश्चर्य हुआ कि बहुत सारे पेशेंट्स में प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। फिर बाद में पर देखा गया कि या तो वो मिक्स्ड ओपन एंगल ग्लाइकोमा था जो उस समय नॉर्मल प्रेशर था, या बाद में अदर आई में भी डेवलप किया उसको ओपन एंगल ग्लाइकोमा। तो स्टेरॉयड रिस्पॉन्डर्स ठीक है, जेनेटिकली है वो, तो ओपन एंगल ग्लाइकोमा भी जेनेटिकली है, तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग है दोनों के बीच में। इसीलिए हर केस में जब भी आप स्टेरॉयड दें, आप खासकर कैटरेक्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को जाने मत दीजिए, उसको बुलाइए फ्रीक्वेंट इंटरवल पर। IOP तो जरूर लीजिए एटलीस्ट लास्ट विजिट में। जी सर। स्टेरॉइड NSAID हर किसी पेशेंट में जरूरत नहीं है। अगर आपका वो पोटेंशियल है कि CME की चांस है, डायबिटिक पेशेंट है या यूवेटिक हिस्ट्री है, तभी आप है। हर पेशेंट में NSAID देने की आवश्यकता नहीं है, उतना कॉर्निया फ्रेंडली भी नहीं है। तो बेहतर हो कि आप स्ट्रॉन्गर स्टेरॉइड यूज करें, क्योंकि हम इंडियन आईज में हम पता नहीं, हम तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरी हिम्मत नहीं है मेरी लोटेप्रेडनॉल यूज करने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव, क्योंकि आई कैन नॉट एक्सप्लेन। और जब तक कोई स्टडी नहीं निकलता ये साबित करते हुए कि आप हर पेशेंट में आप एडिशनल, फिर आप एक जब कंप्लायंस की बात करते हैं तो एक NSAID भी जोड़ें और एक स्टेरॉइड भी आप चलाएं, तो दोनों फिर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर अंजना, जब स्टेरॉइड दे रहे हैं तो डॉक्टर अंजना, जब स्टेरॉइड दे रहे हैं सर, उसके बाद तो जरूरत है। अगर टेपर आप करते हैं, अगर 1 मंथ में अगर आप टेपर करते हैं, यू डू नॉट नीड एनी फर्दर एंटी इंफ्लेमेटरी अनलेस द पेशेंट इज अ डायबिटिक और यूवेटिक पेशेंट। Not in every patient, you don't need. Even if you want to give in every patient, after 1 month you give NSAID. Nothing, no issue.
So Yeah. can we have a consensus की स्टार्ट की एंटीबायोटिक और प्रेडनिसोलोन एसिटेट वो 1 वीक तक दिया जाए और उसके बाद उसको फिर से देखा जाए, जब 5th डे 7th डे जब भी आप कॉल करते हैं तब वो असेस करें कि अब उसको क्या जरूरत है, उस हिसाब से फिर आगे चले। लेकिन एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड वो सेपरेट ही रखना चाहिए। सर एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, लाहन का मैं यूजुअली हर दिन 2-3 रोगी देखता हूँ ऑपरेटेड, दे नेवर यूज एनीथिंग देखते हैं कि अदर भेजते देन भी हैं वहाँ, वन। खाली देखते हैं कि भेजते भी हैं वहाँ। हम काय को भेजेंगे सर, पेट पे क्यों लात मारेंगे? हमारे 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 सीनियर ने रास्ता दिखाया है लाहन का, बट द वॉल्यूम सर्जन्स दे आर, बट दे आर नॉट यूजिंग अदर देन वन ड्रग, डेक्सामेथासोन और बेटनिसोल। सर वहां पे तो आई थिंक बिकॉज ऑफ मनी इशू आल्सो, बिकॉज वहां पे Combination use करते हैं सर, हाँ। कॉम्बिनेशन यूज करते होंगे Combination बिकॉज they can't afford. That's not the issue. We all are graduated from the same institution, from the same pharmacology, but they are still using the same drug and results are good. Okay, there are 10%, 5%, maybe anything. प्राइस का भी तो इशू सर Normally- कंप्लायंस उनके दिमाग में है सर, मेन रीजन इज कंप्लायंस। जितनी कम Yes. दवाएं होंगी मरीज No. उतना ज्यादा सर कंप्लायंस। यहाँ पे हम Yes. एक one place I had seen people prescribing hourly to everybody because 12 बार बोलेंगे तो कम से कम 6 बार तो डालेंगा। So उसमें स्टेरॉइड रिस्पॉन्डर बहुत आते थे। नहीं, हम लोग को वी हैव टू बी मोर साइंटिफिक देन दहान। मैम स्टेरॉइड रिस्पॉन्डर बोध गया कैंप में आता है पेशेंट, 2 महीना बाद आता है, स्टेरॉइड ड्रॉप कै बार डाल रहे हो भैया? तो बोले थे कि 8 बार डालते रहना। कब तक? ये तो ना बोले थे। तो वही है, वही सही है। ड्रॉप एक ड्रॉप नहीं। स्टेरॉइड देके भेज दिया। एक चीज तो मैं कहूंगा कि बिहार में जो बॉर्डरिंग एरिया है नेपाल का, डॉक्टरों की थोड़ी सी किस्मत अच्छी है जो नेपाल के खुराफात से अपनी इज्जत बना के रखा है। ऑपरेशन करा के तो चला आता है, फिर कोई वहां उसको कोई पूछता नहीं है। वो हर बिहार जगह का यही ही हाल है। बोध गया का भी वही है। Sir, I wanted one more question. I wanted to ask to the house about difluprednate. Difluprednate or diflucan is the new drug that has I come. wanted to ask this. Kiska Difluprednate is an I'm old not drug happy. and No, but recently it has got attention and काफी साल but से है ये। many steroid many cases, at least in diabetic, we are seeing they are having high IOP on follow-up. First week or second week they are having in diabetic high IOP. So any similar? Dr. Nilesh, I have seen in almost every second patient in Yes. non-diabetics also I have seen rise of IOP, so I stopped using. I agree with Dr. Height is I'm not high, using. yes. I agree with Dr. Difluprate is causing the IOP rise more in comparison to the other brand of the steroids. And because it's a new drug, we started using it, trying it, but definitely it is more harmful, more side effects than other brands. Indications मेरा are भी यही less, take है। contraindications are more. नहीं सर, आप ट्रीट करने कुछ और जा रहे हैं, मरीज को आप एडिशनल बीमारी दे रहे हैं और अनमॉनिटर्ड। और आईओपी सर 40, 45, 50 तक भी जाता है इसमें डाइफ्लूप्रेडनेट में। इट इज नॉट अ मार्जिनल राइज, इट इज वेरी हाई आईओपी। डॉक्टर रुंगटा, मेरा भी यही ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं सभी पेशेंट्स का आईओपी लेता हूँ रेगुलर इंटरवल पर आफ्टर सर्जरी। तो आई स्टॉप्ड यूजिंग क्या नाम है उसका? डाइफ्लूप्रेडनेट सर। बहुत पैसा लगेगा बोलने में। डाइफ्लूप्रेडनेट जो भी है वो बहुत आईओपी बढ़ाता है सर। तो आई स्टॉप्ड यूजिंग। जो भी बोलो। डॉक्टर सुधीर का ये मैसेज रिमार्केबल है कि आइदर ऑन सेकेंड विजिट और थर्ड विजिट या फाइनल ड्राफ्ट के प्रिस्क्रिप्शन के समय एक बार आईओपी जरूर देखना चाहिए पेशेंट। नहीं, Dr. Sushil, सर सुधीर ने कंजर्वेटिव सलाह दिया Dr. है। Sushil, if you have NCT, in every follow-up case when patient comes to us, we always take the NCT. Always in every case, whether second day, case come first day, second day, patient does not come to me. तो नहीं Patient does not come to me first. Patient always go to the optometrist. There are two things standing by there. One is auto-write, one is NCT. Every patient has done NCT and every visit, whether in any case. It is a rule, and they mark if there is NCT rise, they marked it. So in every post महीना में 4-5 पेशेंट तो मिल ही जाता है जिसका आईओपी बढ़ा हुआ रहता yes, है। and you will not believe it. When we were not having NCT, we must have missed so many cases of the raised IOP.
because we cannot do shots in every case. So we must have so many cases raised IOP when we were not doing the LCT regularly. सर we can miss अरे LCT because screening patient will regular complain करने कि से बहुत दर्द हो रहा है तो advantage हम लोग बोलेंगे वो ऑपरेशन का दर्द है आप if Second thing, NCT is not sometimes there patient is silent. There is no And pain. We don't. Not only post there's op no cases pain. सर, ऐसे भी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, एक सा कंप्लेन देगा, प्रेशर देखिए, यंग लड़का आया था, वेग सा कंप्लेन, इधर दर्द, प्रेशर देखो यार, प्रेशर 40-45 प्रेशर था एनसीटी में. That's why Dr. Amitabh is saying many patients come without any complaint. They do open Yes, sir. glaucoma, and you misdiagnose them if you do not Yes. do the UCT in each and every case. This is recommended. एक प्रॉब्लम और है कि गवर्नमेंट जो स्क्वायर वाले प्रिपरेशन को चीपर बनाई हुई है, जो अगर डिस्पेंसरी में जब जो जाते हैं मेडिसिन शॉप में, तो अगर वो ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन दवा मांगते हैं तो बस वो स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन देता है, वो 17 रुपए में मिल रही है, और सिंपल एंटीबायोटिक कोई भी 100 रुपीज से कम नहीं है. ये 12 प्रॉब्लम रुपए है जो कि स्टेरॉइड का मिसयूज जिसके कारण सरकार का दूरदर्शिता है, बेवकूफी और कुछ कोई तो साइंटिफिक कारण होगा. ऊपर में भी लोग तो बुद्धिमान लोग बैठे होंगे ना, पता नहीं क्यों इस तरह. अरे कहाँ बुद्धिमान है, लगता है सर, नेता लोग लगता है बुद्धिमान कब से हो गया? ये तो एग्जीक्यूटिव भी तो होंगे ना. था क्या, डीपीसीएस में आ गया, डीपीसीएस में आ गया, ड्रग कंट्रोल क्या चीज में आ गया. तो फार्मा कंपनी से भी तो कार्ड खोजता है. क्लॉक्सासिलिन लाया था, डाइक्लॉक्सासिलिन ले आया. अब तो प्रेडनिसोलोन वगैरह देखिए कम किया था, फिर महंगा बिकने लगा, सब तो महंगे हो गया. इंडियन फार्माकोपिया में से सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडियन फार्माकोपिया में सिर्फ एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का ड्रॉप जो है वो रजिस्टर्ड है. यूएस फार्माकोपिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है, वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, बट इंडिया फार्माकोपिया में वो रजिस्टर्ड है और इसलिए बिक रहा है. तो हम प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इसको धीरे धीरे इस इशू को उठाएं. कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है जो कि इसके कारण मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड बहुत हो रहा है, ब्लाइंडिंग भी हो रही है और ये सब प्रॉब्लम हो रही है. तो इस इशू को कहीं भी उठाना जरूरी है कि आखिर ये क्यों सस्ता बनाया जाए. तो सस्ते की बात नहीं है, ऑफ द शेल्फ डॉक्टर के पास नहीं जाना और ऑफ द शेल्फ डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट से डिस्पेंस कराना और उससे ट्रीटमेंट लेना, वहां से शुरू होता है कि मरीज दवाई दुकान में जाके बोलता है कि आंख लाल एक दवाई दे दीजिए, तो स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है, एकदम सटीक इलाज करता है. और स्टेरॉइड शेड्यूल एच ड्रग है, मिलना नहीं चाहिए बाय लॉ, इट शुड नॉट बी डिस्पेंस्ड, बट वो फिर भी दे देते हैं. भाई हम लोग जितना हम लोगों को सुविधा है और जितनी बीमारियां से हम लोग सेल्फ ट्रीटमेंट से हम लोग बच जाते हैं, अगर है सो विदेश जैसे स्थिति रहेगी तो आधी आबादी है सो चली जाएगी यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के इंतजार में. तो इसका एडवांटेजेस तो है ही कि हम लोग किसी भी दवा को ऑफ द काउंटर ले सकते हैं, और वही है कि पेशेंट एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप मत लीजिए. मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारा ये दायित्व है कि पेशेंट एजुकेट करें, क्योंकि फार्मासिस्ट दवा जो है दैट इज पैरिमोन, जो शुरू में काफी इस्तेमाल होती थी. पैरिमोन के जितने एडवांटेजेस हैं उतने डिसएडवांटेजेस भी हैं. किसी भी रेड आई में पैरिमोन डाल दिया जाता था, तो अभी भी है, कोई भी रेड आई है, चाहे दीपक अभी भी वही है सर. गांव देहात का तो 95% पेशेंट आता है स्टेरॉइड डाल के, चाहे सब कंजंक्टिवल हेमरेज है, चाहे कॉर्नियल अल्सर है, चाहे कुछ भी है. हम तो बोलते हैं कि जाइए दवाई वाले के कहिया कि डी वाला दवाई मत देवे, प्लेन वाला दवाई देवे के कहिया के डॉक्टर साहब मना कैलन है कि डी खराबी करेला, इतना बोल बोल के भेजते हैं. सर दवाई दुकान वाला उससे बोलता है डी मतलब डबल फायदा होगा. तो डॉक्टर रुंगटा, अगर सोचते हैं कि काफी डिस्कशन हो चुका है तो आज की सभा समाप्त की जानी चाहिए. डॉक्टर रुंगटा हो गया सर का, भाभी हिंट देने लगी कि आइए खाना खाना है. रुंगटा सर सेकंड इनिंग में है, वो खत्म करना नहीं चाहते हैं. Sir, so before we stop, Pawan Nikum sir from Ajanta Pharma, he wanted to have फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, हम लोग को क्या होम मैसेज मिला? होम मैसेज है कि एक तो पोस्ट ऑपरेटिव डॉक्टर रंजना इसके बाद समअप कर देंगी, लेकिन मेरे हिसाब से उसको मैसेज यही है कि जब भी पोस्ट ऑपरेटिव हम लोग यूज करें तो एंटीबायोटिक अलग और स्टेरॉइड अलग यूज करें, और स्टेरॉइड को फिर टेपर करें, मिसयूज नहीं होने दें, और अपने कांटेक्ट में जो प्रैक्टिशनर हो, और पेशेंट को तो एजुकेट करना ही है, जो प्रैक्टिशनर हो उनको भी हम लोग एजुकेट करते रहे. प्रैक्टिशनर को हम लोग खत्म नहीं कर सकते इस देश में, लेकिन प्रैक्टिशनर को जरूर ये एजुकेट करें कि स्टेरॉइड का मिसयूज नहीं हो, वो लोग स्टेरॉइड नहीं यूज करें. इतना तो है.
और बाकी है कि टॉपिकल के लिए टॉपिकल यूज है, अगर सरफेस पर यूज करना चाहते हैं तो वो सोडियम फॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल यूज करें, और अगर आप इंट्राऑक्यूलर पेनिट्रेशन चाहते हैं जैसे यूवियाटिस का केस है तो उसमें एसीटेट मॉलिक्यूल यूज करें। और सर सबसे वही स्टेरॉइड ट्रीटमेंट जब भी आप जब भी दे रहे हैं तो मॉनिटर्ड ट्रीटमेंट हो, और आईओपी चेकअप आप जो है वो रेगुलर इंटरवल पे करते रहें। फ्लोरोमिथेनॉल से भी आईओपी राइज देखा गया है आप सिंपल केसेस में, लॉन्ग टर्म यूज पे, प्रोलॉन्ग्ड यूज पे, इसलिए हर स्टेरॉइड पेशेंट जो भी आता है फॉलोअप में मैंडेटरी कर दे कि उसका आईओपी चेकअप हो गया आपके पास। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस फ्लोरोमिथेनॉल एंड लोटिप्रेडोल का आईओपी राइज का कोई मैम? हाँ, फ्लोरोमिथेनॉल का हुआ है। पेशेंट एपिस्क्लेराइटिस और टेरिजियम ट्रीटमेंट के लिए 3 महीना पर आया, उसके बाद बोला कि अब धुंधला दिखने लगा, तो स्ट्राइक नहीं किया क्योंकि फ्लोरोमिथेनॉल से कभी नहीं था, लेकिन हमें बस 2 पेशेंट मैंने देखा है जिसको एफएमएल से आईओपी राइज हुआ है आफ्टर 1.5 month यूज। फाइनल मैसेज फ्रॉम हम लोग सर, हेलो सर, हम लोग इतना डिस्कशन कर चुके हैं कि अब फाइनल तो हो चुका है। अब आपको मन बनाना है केवल कि सच में सही क्या है और गलत क्या है ये हम समझें, और क्यों डेविएट करना है, और उसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप अडेप्ट करना चाहते हैं लो कॉस्ट पर कंप्लायंस को लेकर के, लेकिन हर एडेप्टेशन में आप सही क्या है ये बात जरूरी है। और एडेप्टेशन अगर कर सकते हैं तो पेशेंट को समझा करके आप जरूर करें, लेकिन स्टेरॉयड का एकमात्र तरीका यूज का है कि ये ड्यूअल एजेड स्वॉर्ड है, आपके लिए बहुत ही वंडर ड्रग है तब तक जब तक आप इसको मॉनिटर्ड यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही आप अनसुपरवाइज्ड करते हैं, चाहे सिंपल से सिंपल स्प्रिंग कटार में हो चाहे जो भी हो, एकदम स्पष्ट लिखिए जब भी आप स्टेरॉयड ड्रग लिखते हैं कि इसको दोबारा ना लें। मेरा तो यही प्रैक्टिस है, जबकि ताकि वो उसको दोबारा ना खरीदे, तो सुपरविजन में ही स्टेरॉयड देना है, बस इतना ही बोलना था मेरा सर। थैंक यू सर। और ये आपका बहुत अच्छा सेंटेंस था कि दिस वंडर ड्रग differentiate skill between a quack and जी सर, और स्क्वाड वहां से भी लेके आ रहा है, लेकिन हम लोग उसको अगर प्रॉपरली दे रहे हैं तो उससे बेनिफिट हो रहा है और उससे वो ब्लाइंड हो जा रहा है। ये डिफरेंशिएट से करता है। तो और कोई अगर बोलना चाहे तो डॉक्टर केडिया, मिलिंद जी। अपने प्लानेशन टोनोमीटर के साथ एनसीटी को हमेशा कैलिब्रेट करते रहिए कितने डिफरेंस है। आई थिंक दैट विल हेल्प इन ओपीडी। नहीं बिल्कुल, हम लोग तो करते हैं, अगर जिसमें डाउट है उसका एप्लीकेशन कर लीजिए। दैट इज डिफरेंट थिंग। नहीं वो भी करना सही है कि कैलिब्रेट करते रहना है। प्लानेशन करने में प्रॉब्लम आ जाता है। नहीं सर, 10 का लिए उसमें 2-4 का एप्लीकेशन कर लिए, पता ही चल जाता है कि हाँ ठीक है। दैट इज कैलिब्रेशन, दैट इज इनडायरेक्टली कैलिब्रेशन ऑफ। करते ही रहता है लोग सर। डॉक्टर पांडे, आपका कोई क्वेश्चन था? डॉक्टर एचएन पांडे। हाँ, कोई क्वेश्चन? नहीं ठीक है, कोई सुना है सब। नहीं सर, पांडे सर जो है बहुत यूज करते हैं स्टेरॉयड ऑप्टिक न्यूराइटिस में। ऑप्टिक न्यूराइटिस में तो सब लोग करता है, आप नहीं करते हैं। वही वो भी कर रहे हैं कि निर्भय जैन सर। हाँ, हम तो खाली यही करते हैं कि स्टेरॉयड लिखते हैं जिसको, जैसे स्प्रिंग कटार वगैरह में, तो उसमें एक फाइल लिखते हैं, एक फाइल केवल, और खत्म होने पर बंद, और पेशेंट को अलग से बोल देते हैं कि इसको दोबारा अपने से मत लेना। सर खत्म होने पर बंद, और अगर उसका आधा गिर गया और 4 बार के बाद आएगा, फिर आएगा दिखाने। हाँ ठीक है, मैंने अगर खत्म हो जाए तो अब मिल लीजिए तो अपने से लेकर के डालने लगते हैं, उसको आराम मिलने लगता है उससे। ऐसे भी है जिनको बोलिएगा दिन में 6 बार डालिए, 4 दिन में आया खत्म हो गया, कैसे? आप ही ना बोले थे कि 6 बूंद डालिएगा। ये अलग मसला है। थैंक यू वेरी मच। पवन सर। हाँ सर, I just would like to give vote of thanks from Ajanta Pharma. जी सर, I just give vote of thanks to all of you, sir. On behalf of Ajanta Pharma, I take this opportunity to thank you all the eminent doctors for giving this opportunity to be associated with you all.
in this COVID pandemic, I must say that all of you have learned that how to connect digitally to each other. That is one big thing has happened, that everybody is connected digitally to each one of you. Even though we are not meeting, we are feeling that we are meeting all of you. And we must say that we have been associated with Shahabad Ophthalmic Society since June, sir. And almost ऐसा लग रहा है अभी कि एक फैमिली हो गई है सर. चलो भाई, रूंगटा सर का मीटिंग है, हमको जाना है, हमारे पास आएगा तो बात करेंगे, तो ऐसा फैमिली जैसा लगता है. वो ऐसा हो गया है कि जब कुछ ना कुछ सीखने को, हमें भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम लोग भी, तो हमको सीखने को कुछ ना कुछ मिल जाता है. जैसे आज मैं पूरा का पूरा सेशन सुना, स्टीरॉइड की अंडरस्टैंडिंग जो थी और ज्यादा बढ़ गई है. शायद किसी ने पूछा मुझसे कि ये ड्रॉप डालो कि नहीं, तो आई विल से प्लीज कॉन्टैक्ट विद द डॉक्टर, डोंट यूज डायरेक्टली. I can definitely say this. Please talk to the doctor first. Don't take it directly. So And at the same Pharma is educated now. Because of all of you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. We personally thank Milind sir, Roongta sir, and all the eminent doctors once again to be in touch regularly with us, and we can connect easily with all of you. At the same time, sir, एक पेशेंट बेनिफिट के लिए हमने जब पहले ही बोला कि एक नेटारोसुडिल करके फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंटी ग्लोकोमा मेडिसिन लॉन्च किया, दैट इज नेटालो सर. उसका एक बार प्लीज यूज करके देखिए, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं. ऑल इंडिया में हमको काफी अच्छे रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं. आपकी तरफ से भी आपका कुछ फीडबैक जरूर हमको मिलेगा, तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा कि हाउ इज नेटारोसुडिल एक्चुअली वर्किंग इन फर्स्ट टाइम इन इंडिया. फर्स्ट लाइन केसेस में यूज किया है, सेकंड लाइन केसेस में आपने यूज किया है, या टर्शियरी मेडिसिन करके यूज किया है, तो कैसा बेनिफिट आपको मिल रहा है नेटारोसुडिल, ये एक जरूर चाहेंगे सर आप लोगों से फीडबैक, क्या रिजल्ट है उसके. और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ सर. थैंक यू वेरी मच सर टू बी एसोसिएटेड विद ऑल. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity. Vote of thanks बाकी है. सर मुझे पवन सर प्लीज सर मुझे पवन कहिए. पवन आई एम सर नहीं, मैं पवन कहिए सर, कोई दिक्कत नहीं. वोट ऑफ थैंक्स हो गया. Nilesh, vote of thanks किनका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, मिलिंद सर कुछ बोलना चाह रहे थे. वेल प्रेजेंटेड. चलो, थैंक यू. Thank you, sir. Thank you all of you. Thank you very much. Before we leave, I want to announce next month webinar. Every month in March we do program on glaucoma awareness. So next webinar topic is on glaucoma, and eminent glaucoma practitioner, specialist Dr. M. Akbar, sir, he will be giving a talk on basics of perimetry, and Shilpi Agrawal ma'am from SOS, she will be giving a talk on optic disc evaluation in glaucoma. And I would like to invite Abhishek Kumar Singh sir for vote of thanks. So Pawan sir and Milind sir हाथ उठाए. Sir, Nilesh sir, can I take 2 minutes, sir? Sir, 13 से अपना 7 से 13 तक ग्लोकोमा वीक है, वहाँ पे कोई वेबिनार करवाइए ना सर. नहीं हो रहा है ना, 18 को हो रहा है. 18 को हो रहा है क्या? हाँ, 18. ग्लोकोमा वीक में अपना इंटरनेशनल ग्लोकोमा वीक है सर. ग्लोकोमा फोर्टनाइट. दिनेश, Yes sir. रूंगटा सर हमको प्रेशर में डाल रहे हैं कि व्यूअर्स को और काम करना पड़ेगा. और एडवांस में 3 महीना का प्रोग्राम एडवांस में बुक रह रहा है सर यहाँ पे. आपको मिलिंद जी या तो आप लकी हैं या बीओएस लकी है, जो कि इस तरह का कॉम्बिनेशन मिला है. प्रेसिडेंट तो आप हैं ही, सेक्रेटरी विभूति जी हैं. सर ये सुन लीजिए. एडिटर रंजना मैम है, और आपको सीएससी सत्यजीत जी है. आप चुपचाप छोड़िएगा तभी काम हो जाएगा. सर मैं 90s से एसोसिएटेड हूँ अपनी सोसाइटी का. विदाउट एनी हिच आई कैन से आई गॉट द बेस्ट टीम. यस, तो इसलिए आप आई गॉट द बेस्ट टीम. आपका तो काम ऐसे ही अपने अपने हो जाएगा. यस, पंडित जी का काम चल रहा है सर, चिंता नहीं करना. अभिषेक सर. ओके सर, गुड नाइट. वोट ऑफ थैंक्स. Yes, thanks Nilesh. Thanks sir. Thanks everybody on behalf of Shahabad Ophthalmic Society for making this 35th CME and wave meeting successfully. Both the presentations were quite lucid and informative. We have learned many things, and a special thanks to both the presenter, Dr. K.L. Agrawal, a bright young ophthalmologist of Kosi region, and Dr. Satanshu Mathur sir, a knowledgeable person, hard-working ophthalmologist, extempore experience. And also a big thank you to all the chairpersons, panelists, and program coordinator, and today's moderator, our young Dr. Nilesh, for nicely moderating the whole session. My sincere gratitude to our honorable guest panelists
Dr. Sudhir sir, Dr. Anjana ma'am, our president, Dr. Milind sir, for their presence and interactive participation. We are really wiser now. I will like to extend my special thanks to Ajanta Pharma people, especially Pawanji, Hirandanji, for providing all technical support and making this event flawless and successful. Thanks to all. Thank you, sir. Thank Thank you. you, thank you. Thank you, Thank sir. you. Thank you very much. Thank you and good night, everyone. Yes, sir. Thank you Good very night, much. ma'am. Good night, Thank you, everyone. No, no. Anjana ma'am. Thank you. Really Goodbye, having goodbye, this sir. interactive session because of you two.